Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा। एसपी शर्मा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। RBI launches the digital rupee in retail segment on a pilot basis. GST collection for November this year stands over 1,40,000 crore rupees for the 9th straight month. Key domestic stocks finish at lifetime high. Sensex closes above 63,250 points. Nifty settles above 18,800 level. भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह इस वर्ष लगातार 9वीं बार नवंबर में 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा और प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे। सेंसेक्स 63,250 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 18,800 से ऊपर पहुंचा। आज की पहली बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ने खुदरा क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की है। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इसकी कानूनी वैधता होगी। रिजर्व बैंक कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान ही डिजिटल करेंसी जारी करेगा। Retail digital rupee transactions can be carried out through a digital wallet on mobile phones and other devices. Only those digital wallets offered by banks participating in the RBI's digital rupee program can transact in digital currency. The retail digital currency will be distributed through banks. Transactions in digital currency can be carried out between person to person and person to merchant. Payments to merchants can be made using QR or quick response codes displayed at the merchant locations. The first phase will begin with 4 banks: State Bank of India, ICICI Bank, Yes Bank and IDFC Bank first in 4 cities including Mumbai, New Delhi, Bengaluru and Bhubaneswar, and later extend to Ahmedabad, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Indore, Kochi, Lucknow, Patna and Shimla. 4 other banks, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank will join the trial later. For the interest of our layman, from his perspective, I would say, would you elaborate, simplify, what is this RBI digital rupee which is launched today? Yes, this is very simple actually, and this is a great move to reduce the content of paper currency. That becomes sometimes risky if you are carrying some good amount of money, say in lakh or 50,000. That becomes sometimes risky to move here and there. So to replace that risk, the RBI has now introduced the paper currency, digital currency, which will be used as paper currency or the coins. That will be in the same denominations. Like if there is a paper currency of 500 rupees, then there will be a digital currency also in the same manner. So that can be transferred from wallet to wallet with the norms under the banks, those who are designated by the Reserve Bank of India. They will produce those digital currencies to the concerned individuals. They can then transfer wallet to wallet. If I am going to pay some
500 rupees or 2000 rupees to somebody from some entity or some producer or some individual, then they can also transfer that particular money to the others. So that is just like a paper currency, which is not in our hands, that is in our wallet, digital wallet. जी एसपी शर्मा जी, ये जो डिजिटल रुपए की शुरुआत की है आज आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने, क्या इसके पीछे आप एक ये भी वजह मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जिस तरीके से चलन बढ़ रहा था पूरी दुनिया में, उस रुझान को कम करने के लिए भी ये डिजिटल करेंसी आरबीआई ने आज लॉन्च की है? देखिए, जो क्रिप्टो करेंसीज का एक मैं ये कहूंगा जुनून बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने ये सोचा कि हम इससे बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत ने कमाया भी होगा, बहुत ने गवाया भी होगा, गवाने वाले शायद ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें बहुत ही वॉलेटाइल हमने देखा। तो उसको जैसे एक शौक होता है कि हमें एक इसको मोबाइल के थ्रू हमें पेमेंट करना है, तो उनका जो साइकोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए शायद ये एक बहुत बड़ा कदम है कि लोग अभी इसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं, तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि मेरे को अब पैसा अपने पर्स में उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना डिजिटल पर्स लेके उसमें कितना भी अमाउंट लेके मैं कहीं पे जाके जो भी मेरे को पेमेंट करना है, जस्ट लाइक ए कैश, जैसे मेरे को किसी को 2000 रुपया देना है तो मैं उसको सीधा ही ट्रांसफर करूंगा कि ये मेरे 2000 रुपये आपके पास आ गए, और वो आगे जैसे उसने भी आगे किसी को देना है तो वो सेम, उसके पास जितना वो वॉलेट हैवी होता जाएगा, ही हैज ऑल्सो द पेइंग कैपेसिटी कि दूसरे को वो उतना परचेज कर सकते हैं। तो ये आपस में इसका जो वोलासिटी है वो काफी होगा, मतलब एक जो करेंसी है वो जो मैंने ट्रांसफर किया वो आगे कई जगह के ऊपर घूम सकता है। तो खाली आप ये समझिए कि इसने बस रूपी को जो एक पेपर है उसको रिप्लेस किया है या कोइन को। Will it simplify financial transactions and yes, it will simplify. Will it bring in financial inclusivity more? I think this is a great step towards the financial inclusion, क्योंकि आप इसमें पेमेंट जो है, जो एक व्यक्ति को बस उसका थोड़ा नो हाउ जानने की जरूरत है कि कैसे ट्रांसफर करना है। तो जो लोग हैं, जो दूर दराज में लोग हैं, जिनको कहीं जाना आना है या जो ज्यादा अपने पास पेपर लेके जाना थोड़ा रिस्की समझते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और रिटेलर के लिए खास करके जो जिसको कैश की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कदम है कि हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। Moving on, the gross goods and services tax GST collection for November this year stood over 1,45,000 crore rupees. The Finance Ministry said GST revenue collection in the month of November 2022 has registered a growth of 11% in comparison to corresponding month of the last year. It said more than 1,31,000 crore rupees worth of GST collection were made in November 2021. The ministry said in the reported month a total of 25,681 crore rupees were collected as central goods and services tax and 32,651 crore rupees as state goods and services tax SGST in the last month. Over 77 crore rupees was collected as integrated goods and services tax IGST and over 10,000 crore rupees as cess. It said the centre had released 17,000 crore rupees as GST compensation to state and union territories in November 2022. This is the straight 9th month when the monthly GST revenue collection is more than 1,40,000 crore rupees. Dr. Sharma, in what way is this increase of 11% in GST collection indicative of the good health of the economy? Yes, very good question, because now we are moving ahead with more and more GST collections. This is the effect of, I think, simplification of GST also. Now the GST is becoming more good and simple tax. Now people are understanding, and individuals are understanding, producers are understanding more as compared with the many last years, because in 2017-18 some issues were there, some tedious processes were there. Now the processes are becoming more and more simple and people are ready to pay and the collections are increasing. That is number one. Number two, the economy is moving ahead. Now we are the fastest moving economy. We have a good growth number, though decelerated as compared with the previous quarter, but still we are the fastest moving economy in the world charts. That is a great thing, that our economy is resilient
and now people are more confident about the economy. That is reflected from the investors' point of view also. Now the stock markets are making new highs, and GST collections, which is I think if we consider the three major parameters like GST collections, which is the supply side economics. If the producers are producing more goods and services, that's why the GST collections are increasing. That is reflecting the more resilient, robust supply chain of the Indian economy. Second is the policy perspective, which is reflected from the stock market. If some problem is there in the policy, then the stock market will reflect and decelerate like anything. The markets are intact, markets are resilient, markets are strong. That is the policy front. Third is the demand side. If we consider from the vehicles, like the growth of passenger vehicles, that reflects the overall demand trajectory of the economy. That is also strong. So I think now the economy is in a strong trajectory of growth moving ahead, because some uncertainties were there in the previous months, like in June, July, August, we were facing so many uncertainties, like Russia-Ukraine war. There were no clear-cut policy-driven approach, like central banks were increasing the policy rates. Now they are considering that growth is decelerated, growth is impacted because of the policy rate hikes, and fortunately, inflation has also started coming down in so many economies. So I think the worries are diminishing, and economy is taking its shape, real shape, to move forward with more and more strong content of policy environment. How does it show the purchasing power of the consumer? Yes, I think purchasing power of the consumer was impacted by the high inflation. So if the inflation is high, you can't buy the same things in 100 rupees or 1000 rupee. The content of the amount of your purchase will reduce, because you don't have the money to purchase much, and you have to reduce your quantity because of the high inflation. But now, when the inflation numbers are decelerating, we are observing that WPI decelerated from around 17% to less than 9%, and CPI inflation has also started diminishing. Now the consumers, I think in the coming times, will be able to purchase more and spend more in the market, and demand will again rejuvenate to the normal levels. जी, जीएसटी स्लैब्स की अगर हम बात करें, जो कर की जो स्लैब्स हैं, उसमें आपको लगता है कि इसको और अगर युक्ति संगत बनाया जाए और इसको सरल बनाया जाए, तो हमारा ये जो जीएसटी कलेक्शन है, रेवेन्यू की दृष्टि से और भी बढ़ सकता है? देखिए, जो प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स है ना, दैट नेवर एंड्स. इसमें जीएसटी में रिफॉर्म्स तो होती रहेंगी. आने वाले आज के 10 साल भी के बाद भी इसमें रिफॉर्म्स होंगी. लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इसमें स्लैब्स हैं, वो अभी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कई बार उपभोक्ता को या फिर जो प्रोड्यूसर है उसको ये समझ में नहीं आता कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किस स्लैब में फॉल कर रहा है. उसी में एक ही चीज में, एक ही मशीन में अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग जीएसटी होता है. तो उस चीज को आगे आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि और इसको सिंपल किया जाएगा, इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा. लेकिन हमारा जो विचार है, जो इंडस्ट्री बॉडी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 स्लैब होना चाहिए, जो कि एक 5 से 7% के बीच में हो सकता है, दूसरा 10 और 12% के बीच में हो, और तीसरा 16 और 18% के बीच में हो. तो 18% के ऊपर अगर कोई स्लैब है, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज करता है, उसका बोझ ज्यादा है. लेकिन ये भी है साथ में कि गवर्नमेंट हैज टू कलेक्ट द रेवेन्यू टू मीट अप द डिमांड्स ऑफ द इकोनॉमी, टू स्केल अप द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द टैक्स टू जीडीपी रेशो. हमें उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा. लेकिन अभी इस जंक्चर पे हम समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट टाइम है, काफी अनसर्टेनिटीज हैं, इसको एकदम तो हम नहीं कर सकते. लेकिन आने वाले टाइम में आशा है कि सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान करेगी, और इसको एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम 3 स्लैब्स आने वाले टाइम में देख रहे हैं. So is it indicative of the fact that it's time to throw pessimism away, it's time to throw your worries away, and as we are bit by bit climbing up, as we have seen for the past 9 sessions, we're going up, up and up, or should we just hold our breath and say, hey, wait for some time? I don't see that worries are going away forever, but there are swings in the market, like sometimes there are boom-like conditions and sometimes there are depressions. So right now,
the time is looking bright in the coming times because we have faced so many difficulties starting from 2020. Firstly, Corona, then we struggled 2 years with Corona, then that was followed by the Russia-Ukraine, then high inflation. So last 2.5 years were very, very difficult for the economy, for the people, for the governments, and for the policymakers. But now the fruits of those reforms we have to reap in the coming times. That time has come that we will see some good spot in the system, and India is always a bright spot in the global ecosystem, and we are attracting so many investors in the economy, and our economy is resilient. That is the fortunate thing at this juncture. In so many difficulties, so many headwinds, we are growing at a resilient rate. जी, बात करते हैं शेयर बाजार की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में 0.29% की बढ़त दर्ज हुई। लगातार 8वें कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ सेंसेक्स 63,250 अंक जबकि निफ्टी 18,800 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 185 अंक के उछाल से 0.29% ऊपर 63,284 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54 अंक बढ़कर 0.29% ऊपर 18,812 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.62% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.63% लाभ में रहे। The Sensex and the Nifty today closed at record highs. Both indices rose 0.29% amid positive cues from global share markets. Extending gains for the 8th session in a row, the BSE Sensex finished above the 63,250 points, while the Nifty settled above the 18,800 level. The Sensex rose 185 points to finish at 63,284. The Nifty also appreciated 54 points to end at 18,812. In the broader market at the BSE, mid-cap index gained 0.62% and the small-cap index ended 0.63% up. In the Sensex pack, 16 companies posted gains while 14 logged losses. Ultratech Cement was a top gainer as it added 2.9%, followed by Tata Steel, which surged 2.8%. TCS added 2.4% and Tech Mahindra added 2.3% up. On the other hand, ICICI Bank declined 1.4%. Mahindra & Mahindra fell 1.1%. Power Grid slipped 0.9% and Hindustan Unilever ended 0.7% down. In sectoral indices at BSE, 12 sectors gained while 8 logged losses. IT sector gained 2%. Realty index climbed 1.9%, consumer durables surged 1.8%, and tech sector added 1.6%. On the other hand, power, oil and gas, and telecom indices plunged 0.7% each. The overall breadth of the BSE trade was positive, as shares of 2,033 companies gained, while 1,463 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. And also, we will take the rupee and take a short break after that. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। बात करते हैं रुपए के प्रदर्शन की। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 22 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.36% गिरकर 105.57 पर कारोबार कर रहा था। एसपी शर्मा जी, अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो लगातार नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है शेयर बाजार 63,000 के आसपास। क्या
कारण आप देख रहे हैं इस तेजी के पीछे पिछले 8 कारोबारी सत्रों से जो हम देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण मैं इसमें देख रहा हूं कि जो सरकार ने रिफॉर्म्स की पिछले 3 साल में, जो हमने रिफॉर्म्स मैं समझता हूं जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 में शुरू की थी हमने रिफॉर्म्स। एनबीएफसी सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स की, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि 2020 के शुरू में ही हमें कोरोना ने हिट किया, जिसकी वजह से जो रिफॉर्म्स थी वो सामने, उनके फ्रूटफुल जो नतीजे थे वो सामने आ ही नहीं पाए। हमें कहीं और ध्यान देना पड़ा। तो पिछले 2-2.5 साल उस सिस्टम में निकले कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिजुविनेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिनको बहुत ज्यादा सहूलियत की जरूरत थी। तो लेकिन अभी जो सरकार की जो रिफॉर्म्स हैं वो आगे अभी उनके जो विजिबल रिजल्ट्स हैं वो सामने हमें दिख रहे हैं, जो कि आपने जैसे बताया कि मार्केट्स न्यू हाइस बना रही हैं। अभी मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है, मैं ये कहूंगा। अभी तो ये मार्केट्स उस लेवल पे हैं जो इनको 2020 में होना चाहिए था। लेट मी टेल यू कि जो 2020 के स्तर में मार्केट को ये ऊंचाई छूनी चाहिए थी, लेकिन वी आर लेट बाय एटलीस्ट 2 years। तो वो अभी मार्केट्स में रिफ्लेक्शन और आएगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट्स यहां से और ऊपर जाती रहेंगी। दैट वॉलेटिलिटी कांट बी रूल्ड आउट, करेक्शंस भी कांट बी रूल्ड आउट। करेक्शंस भी हो सकती हैं, डीप करेक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन मार्केट में अभी जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल हेडविंड्स होते हैं। कभी कोई अनसर्टेन कोई ऐसी न्यूज आ गई तो मार्केट्स करेक्शन लेती हैं, लेकिन हमारे फंडामेंटल हमेशा स्ट्रांग है। मार्केट्स वापस रिकवर करके, जब भी वो जो वरी खत्म हो जाती है, जैसे वो टेम्परेरी वरीज होती हैं जो ग्लोबल हम देखते हैं, कभी जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में वॉर है, वो एक टेम्परेरी वरी है, वो कभी खत्म हो जाएगा। और इन्फ्लेशन आया, वो भी एक टेम्परेरी था, वो भी सबसाइड होना शुरू हो गया। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस राइज किए, वो भी टेम्परेरी था, कभी भी वो उच्च स्तर पे नहीं रहते। तो हमारा जो एक मोमेंटम है, जो रिफॉर्म्स के बेसिस पे हमने तय किया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है 2047 तक, तो उसके मद्देनजर जो सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं उनका रिफ्लेक्शन अभी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अमृतकाल में ही बहुत कुछ होने वाला है। So you mentioned about India being a resilient economy and India being a strong economy, and it has a potential to grow in the coming months or years. Yes, I am very bullish on that. There could be pitfalls, as you very rightly said, from time to time. That can't be ruled out. That cannot be ruled out. Yes. So will the interest of the FPIs continue to be there in India going forward? Will 2023 be the year of massive flow into India year? Because there is no doubt about the India's resilience, and we will attract more and more money because our growth is resilient, and we will, according to IMF, you see the next 4-5 years, our growth is projected highest among the leading economies, and we are providing the fruitful results on the investments. So that will attract more and more money, and money always moves to the potential growth partners, and we are the brightest of the growth partners. So that is a great thing that going forward we have to attract, and we will attract the global money because we are resilient and we are growing fast as compared with any comparable economy or any large economy. जी, आईटी सेक्टर की बात करें तो आज 2% का हमें यहाँ पर गेन दिख रहा है आईटी सेक्टर में। आईटी शेयरों में आज अच्छी चमक रही है। क्या आपको लगता है कि जो आईटी शेयर्स के साथ या आईटी कंपनीज के साथ जो चिंताएं चली आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, वो अब खत्म हो गई हैं? चाहे वो रेट ऑफ एट्रिशन की बात हो या जो रुपी डॉलर का जो एक वो था कि डॉलर की मजबूती और रुपए का थोड़ा सा कमजोर होना, तो ये सब चिंताएं अब आपको लगता है कि दूर होती जा रही हैं और आईटी शेयरों में अब अच्छा हम आगे देखेंगे बढ़ते हुए इनको? देखिए, चिंताओं का दौर क्या होता है कि कई बार स्टेबल होता है। चिंताएं हम ये नहीं कह सकते कि वो टोटली वरीज हमारी एक ही जंक्शन पे खत्म हो जाती हैं, एक ही बार शुरू होती है, लेकिन ये जरूर है कि हमारा अभी स्टेबिलिटी बनी है। जैसे स्टेबिलिटी मीन्स के हमारे जो वरीज थे, अगर हमारे पास 5 वरीज हमारे सर पे मंडरा रहे थे तो खत्म होके खाली 1 या 2 रह गए। अभी खाली हम ये देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए और कोई मेजर वरी नहीं है। इन्फ्लेशन सबसाइड होना शुरू हो गया, वो एक ही महीने में तो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें जो चाल थी, जो न्यू हाइज बना रहा था, वो सबसाइड होके एक कंफर्ट लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और
तीसरा जो लिक्विडिटी, उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में सेंट्रल बैंक्स जो है वो इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन सबसाइड होना शुरू हो गया और जो ग्रोथ है काफी इकोनॉमीज में डिसेलरेट हो गई है. नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट द ग्रोथ, रिवाइवल ऑफ ग्रोथ. अब वो इन्फ्लेशन के बारे में कम सोचेंगे और ग्रोथ को रिवाइव करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे. तो एक बैलेंस जो बनना था, जो एक ऑटोमेटिक बैलेंस बना है, उसने एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि ब्रॉड बेस्ड रैली आपने देखी है. वो खाली आईटी सेक्टर आज चला, कल कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर चला था. तो ऐसे करके हर एक सेक्टर चलेगा, हर एक सेक्टर एक एक अपना पोजीशन लेगा. तो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी मार्केट में रहेगी, जो बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम. Dr. Sharma, related to your last comment, inflation is peaking out, rupee is moving towards stability, and you said that there will be massive inflows going forward into the markets. If that happens, what happens to the nature of stocks which will outperform and underperform because of the liquidity factor? Yes, very good question, because now we are observing that reforms are for the every sector. Government has undertaken reforms for the MSMEs, for the NBFCs, for the financial sector, for the infrastructure. There is a great infrastructure pipeline which is of more than 100 lakh crore. So I think every sector is promising. There is no sector which is not undertaken at a serious focus. I think government has focused all the sectors. Now we have to move forward, but there is a need to, I would say that investors should not be that much bullish. They should do their due diligence according to their financial advisors. So there are a lot of companies which are not performing well also, and they have to check their balance sheets and with a great due diligence, because there may be some risk of investing in some company which is not well informed. So but overall momentum of the economy, overall momentum of the investments, or overall momentum of the markets is very, very strong at this sector. रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का. एशियाई शेयर बाजारों में आज तेजी रही. जापान का निकेई 0.9%, हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% बढ़त के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% लाभ में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट बंद हुआ. अंतर्देशीय कारोबार के दौरान यूरोपीय शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख था. लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक दोनों 0.1% ऊपर चल रहे थे. जर्मनी का डेक्स 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. The Dow Jones Industrial Average climbed 2.2% and S&P 500 surged 3.1% and the Nasdaq Composite Indices jumped 4.4% up. Dr. Sharma, yesterday Federal Reserve Chair Jerome Powell said the central bank might scale back the pace of its interest rate hikes this month. Therefore, I'm emphasizing might. So if that happens, then how will the world economy be reflecting it? Very briefly. That will reflect in the financial markets. They will again moving up and can make new highs. And that will be a great indication that the rigidity or the aggressive moves by the central banks are going to subside. Brent crude was trading at $87.70 per barrel, while the WTI crude prices were at $81.70 per barrel. बात करें कीमती धातुओं की. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का वायदा मूल्य आज 480 रुपए बढ़कर 52,960 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 760 रुपए की तेजी से 63,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,791.60 प्रति औंस और चांदी $22.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही. In one line, gold, yes or no? Yes. Yes. Okay. Gold is bright and gold is shining, and gold will remain shining in the coming years too. एसपी शर्मा जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी शुक्रिया. Thank you for being with us, Dr. S.P. Sharma. And before we close, the headlines once again. RBI launches the digital rupee in retail segment on a pilot basis. GST collection for November this year stands over 1,40,000 crore rupees for the 9th straight month. And key domestic stocks finish at lifetime highs.
Sensex closes above 63,250 points. Nifty settles above 18,800 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. We will be with you tomorrow, same time. Till then, take care. Namaskar. Market Mantra.